All right, read tonight. Wait a minute. 1, 2. All right, read the light. Wait a minute. 1, 2, 3. A cartoon that first hit TV screens in 1989 has spent decades making people laugh, but behind the jokes is something far stranger. The Simpsons has a habit of putting outrageous ideas on screen, only for those very things to unfold in the real world years later. They showed Donald Trump as president 16 years before it happened. They slipped in jokes about smartwatches, video calls, and even major sporting outcomes long before those events were remotely plausible. Each time, fans shake their heads and say, they predicted it again. But the most chilling part isn't what's already come true. Recent episodes seem to hint at a dark and chaotic 2026, artificial intelligence rebelling, economies unraveling, and society itself bending under pressure. The writers dismiss it as coincidence and clever satire. Yet the evidence, episode after episode, keeps piling up. Let's break it down, one eerie prediction at a time. In April 1994, The Simpsons aired an episode called Sweet Seymour Skinner's Badass Song. In a quick throwaway gag, Lunch Lady Doris hefts a barrel labeled Assorted Horse Parts, now with more testicles. At the time, it was just another jab at terrible school food. Fast forward nearly 19 years. In 2013, news broke across Europe that supposedly beef products in the UK, Ireland, and France were heavily adulterated with horse meat. Some samples contained no beef at all. Headlines screamed. Supermarket shelves were stripped. Politicians demanded investigations. People who remembered the old episode suddenly saw it differently. The joke wasn't funny anymore, it felt prophetic. Major outlets like the BBC ran wall-to-wall coverage of the scandal, while social media filled with memes comparing the news footage to Doris's barrel. Of course, The Simpsons didn't cause the scandal. But the timing and bizarre detail of the joke, assorted horse parts, made it feel as if the writers had peered decades into the future of Europe's food industry. Coincidence? Maybe. Yet it remains one of the most talked-about predictions in the show's history. Go back to November 1st, 1990. In the episode 2 Cars in Every Garage and 3 Eyes on Every Fish, Bart goes fishing near Springfield's nuclear power plant and reels in a glowing orange fish with 3 eyes. They name it Blinky. It's pure satire about pollution and nuclear energy, until reality catches up. In 2011, a fisherman in Argentina caught a 3-eyed fish in a reservoir adjacent to a nuclear facility in Cordoba. Photos of the creature spread worldwide. Soon after, reports of 3-eyed fish surfaced in Brooklyn and New York State. Scientists were careful not to blame radiation outright, but they acknowledged that heavy pollution can trigger genetic mutations. 3-eyed fish are extremely rare, and finding one so close to a nuclear plant felt like art mirroring life with eerie precision. Viewers dug out old VHS tapes and streaming clips of Blinky. Once again, the cartoon's absurd scenario had appeared, nearly frame for frame, in reality. 94's episode Lisa on Ice delivered a quick gag that would become a tech world legend. Bully Kearney scribbles Beat Up Martin on Apple's early digital assistant, the Newton. The device misreads his handwriting and outputs Eat Up Martha. It seemed like a one-off joke about clumsy handwriting recognition. But when smartphones and predictive text became daily essentials in the 2000s, millions of users discovered the same frustration, autocorrect mangling messages. Ducking, instead of a popular curse word, became an internet cliché. The influence runs deeper. Apple engineers who developed the first iPhone have admitted that Eat Up Martha became a mantra. They didn't want their device to repeat the Newton's embarrassing failure. Yet decades later, autocorrect still frustrates texters everywhere, just as The Simpsons foretold in a 22-minute comedy. December 20th, 1990, brought Itchy and Scratchy and Marge, where Marge campaigns against violent cartoons. Her crusade snowballs into a broader movement to censor art. When a statue of Michelangelo's David comes to Springfield, some residents demand it be clothed. Marge reverses her stance, declaring that art must remain untouched. Jump to 2016.
In St. Petersburg, Russia, a replica of David went on public display. Residents launched a petition to cover the nude figure with a fig leaf or pants. The city held a public vote. The statue remained uncovered. The parallels are uncanny. Identical debate, same artwork, and the same final decision. A satirical plot about censorship and shifting moral lines became real-world news more than 25 years later. On February 14, 2010, an episode showed Homer and Marge joining Team USA's Olympic curling squad in Vancouver. Against all odds, they win gold, beating Sweden. At the time, the U.S. had earned only a single bronze medal in the sport. 8 years later, at the 2018 Winter Olympics in Pyeongchang, the American men's team stunned the world by capturing gold, defeating Sweden in the final match. Fans remembered the episode instantly. The precise matchup, the improbable victory, and even the tense back and forth of the game mirrored the cartoon almost stone for stone. Writers later said they simply noticed curling's rising popularity in 2010. Still, the exact prediction was hard to dismiss. March 30th, 2014's episode featured Homer as a World Cup referee who uncovers deep corruption inside FIFA. Cartoon officials accept bribes, and one is even arrested mid-tournament. A year later, international headlines exploded. Top FIFA executives were arrested on charges of racketeering and corruption. Investigations uncovered decades of bribery surrounding World Cup bids. Viewers who had laughed at Homer's fictional whistleblowing suddenly saw the show as a crystal ball. What had been a cheeky sports subplot turned into a near documentary on real soccer politics. After dozens of cases like these, it's easy to wonder, coincidence or something deeper? The Simpsons writers insist their job is to study trends, exaggerate them, and aim jokes at the future. Statistically, with hundreds of episodes, some gags were bound to align with real events. Yet the sheer specificity, dates, details, and outcomes still chills fans. And then there's the murmur about 2026. Recent episodes have played with themes of artificial intelligence rebellion, economic collapse, and social unrest, all while today's news cycle inches in that direction. Whether these alignments are prophecy, sharp cultural observation, or just the law of large numbers, they challenge us to look twice at the stories we consume. Maybe satire has a way of catching truths before the rest of us notice. Maybe a cartoon really can hold a funhouse mirror up to the future. One thing is certain. Next time an outrageous plotline airs, millions will be watching, not just to laugh, but to see if tomorrow is already hidden in Springfield. In a 1995 episode titled Lisa's Wedding, the show jumps forward to the year 2010 and shows London's skyline. Among the futuristic buildings is a tall, glass-covered tower strikingly similar to what would later become the Shard, a skyscraper that wouldn't even be proposed until 2000 or completed until 2012. That detail alone might be dismissed as clever futurism. But what startled fans was a brief background gag showing smoke curling from the tower's top as firefighters scramble. Nearly a decade after the Shard opened, a real-life fire broke out on one of its upper floors. Although quickly contained, news footage of smoke against the glass facade mirrored the animated vision almost perfectly. Urban planners who worked on the actual building were stunned when fans circulated side-by-side images. The episode had essentially drawn the UK's tallest building years before its blueprints existed and even hinted at a future emergency. Back in 1995's Lisa's Wedding, another blink and you'll miss it, scene showed Lisa's fiancé speaking into a watch to make a call. At the time, wrist-worn communicators were pure science fiction outside of spy movies. Fast forward to 2014, Apple introduces the Apple Watch, and wearable tech goes mainstream. Early adopters were quick to share screenshots of the old Simpsons frame where a tiny microphone sits on a cartoon wrist. Tech historians point out that Dick Tracy Comics had two-way wrist radios decades earlier, but The Simpsons broadcast the idea to a massive global audience in a casual, domestic context. Years before companies like Apple, Samsung, and Garmin invested billions to make it real. 1998's episode, When You Dish Upon a Star, a quick background gag shows the entrance to 20th century.
Fox with a sign reading, "A division of Walt Disney. Co." It was a throwaway joke about media monopolies. 2 decades later, in 2017, Disney announced its $71 billion acquisition of 21st Century Fox, officially closing the deal in 2019. The accuracy was uncanny, down to the very name on the sign. Industry analysts later admitted that while mergers were always possible, no one seriously predicted Disney would buy a historic rival of that scale. Fans dug up the old frame, calling it one of the clearest examples of the show's psychic abilities. Season 10's The Wizard of Evergreen Terrace, 1998, features Homer on a whiteboard writing a complex equation while dreaming of becoming an inventor. Years later, physicists noticed that the equation closely matches the formula predicting the mass of the Higgs boson, often called the God particle. When the real particle was confirmed at CERN's Large Hadron Collider in 2012, scientists were floored by the similarity. While it's unlikely the writers performed high-energy physics for a gag, the coincidence once again fed the mythos that The Simpsons can see the future, right down to particle physics. In 1993, the show aired Marge in Chains, where a mysterious flu called the Osaka flu spreads through Springfield after arriving from overseas. Citizens panic, hospitals overflow, and rumors run wild. During the COVID-19 outbreak of 2020, that episode resurfaced everywhere online. Viewers highlighted frames of residents wearing masks, demanding cures, and hoarding supplies. While experts caution that global flu outbreaks have long been a reality, the narrative beats, the origin, the panic buying, the desperate search for a vaccine felt eerily familiar. Public health? Officials even used the episode in presentations to show how popular media can foreshadow real social reactions to a crisis. Season 9's 1998 episode Bart Carney contains a small but striking visual. Kids in an arcade wearing bulky headsets and waving their arms as if inside another world. At the time, consumer VR was a sci-fi novelty that rarely worked well. Jump to the 2010s and companies like Oculus, HTC, and Sony turned virtual reality into a thriving industry. By the late 2010s, footage of gamers swinging controllers in living rooms looked uncannily like The Simpsons' exaggerated cartoon scene. Fans loved to post side-by-side GIFs showing Bart's VR thrashing next to modern headset users. In Politically Inept, with Homer Simpson, which aired in January 2012, a quick ticker scrolls across a TV screen reading, "Europe puts Greece on eBay." At the time, Greece's financial troubles were news, but the gag seemed over the top. Only months later, Greece plunged deeper into debt, sparking bailouts, mass protests, and talk of leaving the Eurozone. International headlines about selling off Greek assets echoed the cartoon's joke almost word for word. Economists later cited the episode as a surprisingly sharp snapshot of the coming turmoil. The 2012 episode Lisa Goes Gaga featured Lady Gaga descending from the sky in a silver outfit, suspended by cables during a Springfield concert. It looked like pure spectacle. 5 years later, during the 2017 Super Bowl halftime show, Lady Gaga made a dramatic entrance from the stadium roof, lowered by wires wearing a glittering silver costume. Social media exploded with comparisons. Even Gaga herself laughed, tweeting that maybe she owed the writers a thank you for the idea. Back in the 1995 Future Set episode Lisa's Wedding, Lisa chats with her mom via a full-screen video call. At the time, consumer internet was still crawling and webcams were rare. When Apple introduced FaceTime in 2010, fans immediately pointed out the cartoon's accuracy. Today, video calls are as common as phone calls, making The Simpsons' mid-90s vision of effortless, real-time face-to-face chatting one of its most obvious successes. In the 1997 episode Lisa's Sacks, Marge offers Bart a book titled Curious George and the Ebola Virus. It was just a quick sight gag. Ebola outbreaks were known, but not a top-of-mind fear. In 2014, the United States faced a major Ebola scare with cases in Dallas and widespread public concern. News programs used the old Simpsons frame as a chilling "they knew" meme.
though epidemiologists reminded viewers that Ebola had been circulating in Africa since the 1970s. Still, the precise mention years before an American outbreak kept the prediction legend alive. Season 11's 2000 episode, EIEI, Annoyed Grunt, opens with a gag about Homer using tiny airborne robots to spray crops. At the time, agricultural drones were unheard of outside military experiments. By the late 2010s, farms across the world were deploying quadcopters for everything from precision irrigation to pest control. Footage of drones hovering above wheat fields looks almost frame for frame like Homer's chaotic aerial sprayers, cementing yet another Simpsons did it first moment. Season 10's The Wizard of Evergreen Terrace, 1998, shows Homer standing before a whiteboard filled with equations. Physicists later pointed out that one formula predicts a particle with a mass remarkably close to the Higgs boson, which scientists didn't confirm until 2012 at CERN. While the writers likely borrowed an equation from existing physics papers, the near-perfect mass prediction keeps this example high on every Uncanny Simpsons science list. In a 2002 episode, The Sweetest Apu, Lisa attends a full orchestra concert where musicians play the soundtrack of a fictional video game while giant screens show gameplay. At the time, symphonic game concerts weren't mainstream. Within a decade, tours like Video Games Live and The Legend of Zelda, Symphony of the Goddesses, were selling out theaters worldwide. Fans now point to that Simpsons scene as a glimpse of the booming game music in concert halls trend years, before it hit. The 1998 episode Mayored to the Mob features Mark Hamill performing at a Springfield convention while a sign in the background reads Disney presents Star Wars. At the time, Lucasfilm was firmly independent. In 2012, Disney shocked Hollywood by buying Lucasfilm for over $4 billion. Suddenly, that background joke looked like clairvoyance. Star Wars is now one of Disney's biggest properties, exactly as that brief Springfield gag implied. In 2013's episode, The Fabulous Faker Boy, a headline flashes on a TV ticker. Bitcoin hits crazy new highs. It was a minor throwaway when Bitcoin was still niche. Years later, Bitcoin and other cryptocurrencies would indeed explode to historic valuations, crash and surge again, dominating financial headlines. The old ticker screen is still shared whenever crypto prices spike or dip, feeding the legend that the writers anticipated the entire digital currency boom. Season 2 का 1991 एपिसोड Bart the Murderer में एक शॉर्ट गैग है जहां बैकग्राउंड में खुद चलने वाली गाड़ी दिखाई देती है। ड्राइवर बस न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। उस वक्त सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी सिर्फ साई-फाई थी। 4 के बाद गूगल, टेस्ला और बाकी कंपनीज ने ऑटोनोमस व्हीकल्स को रियल बनाया। 2020s में टेस्ट ड्राइव्स और रोबोटैक्सी सर्विसेज देखकर फैंस ने तुरंत सिम्पसन्स का पुराना फ्रेम शेयर किया कि कार्टून ने डेकेड्स पहले ड्राइवरलेस फ्यूचर का हिंट दिया था। 2005 के एपिसोड लीसा द वेजिटेरियन में लीसा एक साइंस फेयर बूथ देखती है जहां बच्चे लैब ग्रोन मीट का सैंपल दिखाते हैं। उस वक्त यह कॉन्सेप्ट सिर्फ रिसर्च पेपर्स में था। 2013 में नेदरलैंड्स में पहला लैब ग्रोन बर्गर बनाया गया और आज प्लांट बेस्ड और कल्चर्ड मीट एक बड़ी इंडस्ट्री है। सीन का एग्जैक्ट डायलॉग, इट्स मीट बट नो एनिमल्स हर्ट, आज की मार्केटिंग स्लोगन्स जैसा लगता है। टन 12 के एपिसोड रिप्लेसेबल यू में होमर के ऊपर एक छोटा ड्रोन पैकेज गिरा देता है। टैब ड्रोन्स मोस्टली हॉबी गैजेट्स थे। सिर्फ 1 साल बाद अमेजॉन ने प्राइम एयर प्रोग्राम अनाउंस करके कमर्शियल ड्रोन डिलीवरी की शुरुआत की। 2020s में ग्रोसरी और फार्मेसी डिलीवरीज ड्रोन से हो रही हैं, बिल्कुल कार्टून के थ्रो अवे जोक जैसी। 1993 का एपिसोड बार्ट्स इनर चाइल्ड में स्प्रिंगफील्ड में पानी की कमी और सरकारी रेशनिंग दिखाए गए। उस वक्त ड्राउट हेडलाइंस में नहीं थी। 2010s में कैलिफोर्निया और दुनिया के और हिस्सों में सीवियर ड्राउट्स, वाटर रिस्ट्रिक्शंस और रैशनिंग आम बात बन गए। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने इस एपिसोड को क्लाइमेट फॉरसाइट का एग्जाम्पल बताया। 1999 के 30 Minutes Over Tokyo में फैमिली जापानीज रियलिटी एस्केप पॉड्स यूज करती है जहां लोग अपनी पसंद का डिजिटल वर्ल्ड चूज करते हैं। आज के वीआर मेटावर्स और इमर्सिव गेमिंग एक्सपीरियंसेस मेटा
वी आर चैट, रेडी प्लेयर वन इसी इमेजिनेशन का रियल वर्जन लगते हैं। फैंस इस क्लिप को प्रूफ के तौर पे शेयर करते हैं कि शो ने मेटावर्स का कॉन्सेप्ट पहले ही स्केच कर दिया था। 1998 के एपिसोड होम स्वीट होम डिडली डम डूडली में एक सीन है जहां स्प्रिंगफील्ड के घर खुद से लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं, टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं और ओनर्स को वॉइस से रिस्पॉन्ड करते हैं। असवाक वॉइस कंट्रोल्ड स्मार्ट होम्स सर्फ एक्सपेरिमेंटल लैब्स टैक्स सीमित। आज अमेजॉन एलेक्सा, गूगल होम और स्मार्ट थर्मोस्टैट्स जैसे गैजेट्स ये सब काम रूटीन बन चुके हैं, बिल्कुल कार्टून के फ्यूचरिस्टिक गाग की तरह। 2000 के एपिसोड मैक्सिमम होमर ड्राइव में होमर ट्रक स्टॉप डाइनर में एक टच स्क्रीन से खाना ऑर्डर करता है। स्क्रीन से डायरेक्ट किचन को ऑर्डर जाता है। उस समय टच स्क्रीन कियोस्क्स रेयर द 2020s में मैकडॉनल्ड से लेकर अपस्केल रेस्टोरेंट्स तक सेल्फ ऑर्डरिंग स्क्रीन्स हर जगह मिलते हैं, जो यूज एक छोटे विजुअल को आज का नॉर्म बना देते हैं। 2005 के मिडनाइट आरएक्स में एक टीवी टिकर फ्लैश करता है। ग्लोबल इकोनॉमी शिफ्ट्स टू वर्चुअल कैश। बिटकॉइन टैब तक नीश इंटरनेट एक्सपेरिमेंट था। आज क्रिप्टो एक्सचेंजेस और सीबीडीसीज, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, रियल इकोनॉमिक फोर्स हैं। एग्जैक्टली जैसा स्प्रिंगफील्ड टिकर ने कैजुअली हिंट दिया था 1999 के लीसा द ट्री हगर में। लीसा यूथ लेड क्लाइमेट मार्च ऑर्गेनाइज करती है, बैनर्स और चार्ट्स के साथ। उस वक्त क्लाइमेट एक्टिविज्म मोस्टली एडल्ट्स और साइंटिस्ट्स तक लिमिटेड था। ग्रेटा थुनबर्ग की वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट स्ट्राइक्स 2018 ऑनवर्ड देखकर फैंस ने कहा कि लीसा का प्रोटेस्ट उस मूवमेंट का पहला एनिमेटेड ड्राफ्ट लगता है। 2004 के फ्यूचर ड्रामा में एक बैकग्राउंड में स्प्रिंगफील्ड में एक मशीन पूरा घर लेयर बाय लेयर प्रिंट करती है। 3D प्रिंटिंग टैब हॉबियस्ट स्टेज में था और बिल्डिंग स्केल प्रिंटिंग इम्पॉसिबल लगता था। आज दुबई, ऑस्टिन और यूरोप में पूरे घर 3D प्रिंट हो रहे हैं, बिल्कुल कार्टून के फ्यूचरिस्टिक कंस्ट्रक्शन सीन की तरह। 1997 के एपिसोड द स्प्रिंगफील्ड फाइल्स में होमर कैजुअल रिमार्क करता है, Soon we'll watch everything on one giant service. Us walked cable TV का जमाना था। आज नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, Amazon प्राइम जैसे प्लेटफॉर्म्स का इंटेंस स्ट्रीमिंग वॉर देखकर लगता है जैसे राइटर्स ने पूरा एंटरटेनमेंट फ्यूचर इमेजिन कर लिया था। 2000 के अ टेल ऑफ टू स्प्रिंगफील्ड्स में एक सिटी फेस्टिवल में होलोग्राफिक जैज लेजेंड्स परफॉर्म करते हैं। टैब होलोग्राम स्टेज शो सर्फ थियरी द 2012 में टुपाक शकूर का कोचेला होलोग्राम और आज के अब्बा वॉयज कॉन्सर्ट्स बिल्कुल स्प्रिंगफील्ड के यूएस वर्चुअल परफॉर्मेंस जैसे लगते हैं। 1995 के लीसाज वेडिंग में एक क्विक बैकग्राउंड शॉट में साइलेंट प्लग इन कार्स स्प्रिंगफील्ड स्ट्रीट्स पर चलती दिखाई देती हैं। असवाक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नीश कॉन्सेप्ट थी। आई टेस्ला, BYD और EV चार्जिंग स्टेशंस हर जगह हैं। एग्जैक्टली कार्टून के क्लीन एनर्जी हिंट जैसे 2001 के न्यू किड्स ऑन द ब्लेच में बार्ट एक्सीडेंटल पॉप स्टार बनकर मैस फॉलोइंग और स्पॉन्सरशिप्स लेता है। ये स्टोरी लाइन आज के इन्फ्लुएंसर कल्चर का अर्ली एनिमेटेड वर्जन लगता है, जहां लोग वायरल फेम से ब्रांड डील्स और मैसिव ऑडियंसेस पाते हैं। 1993 के सेल्मास चॉइस में एक फेयर ग्राउंड वेंडर चिल्ड्रन को वेयरेबल वीडियो गॉगल्स बेचता है जिसमें लाइव फीड और AR स्टाइल ओवरलेज होते हैं। उस वक्त ऑगमेंटेड रियलिटी कंसेप्ट ही नहीं था। 2013 में गूगल ग्लास और आज के AR हेडसेट्स ने उस क्विक गैग को रियल टेक्नोलॉजी में बदल दिया। 1994 के एपिसोड होमर लव्स फ्लैंडर्स में एक बैकग्राउंड जोक में स्प्रिंगफील्ड पुलिस एक इंस्टेंट ID कैमरा यूज करती है जो क्राउड में से होमर का चेहरा तुरंत डिटेक्ट कर लेता है। तब यह सिर्फ साई-फाई था। आज के एयरपोर्ट्स, स्टेडियम्स और इवन स्मार्टफोन्स में फेस अनलॉक देखकर लगता है कि राइटर्स ने AI सर्वेलेंस का दौर पहले ही इमेजिन कर लिया था। 2005 के मिडनाइट RX एपिसोड में मिस्टर बर्न्स कैजुअली कहता है, "One day money will just be digits in the ether." 2010 के बाद बिटकॉइन और ब्लॉकचेन बूम ने इस थ्रो अवे लाइन को ईरली प्रोफेटिक बना दिया। डिजिटल वॉलेट्स और NFTs आज उसी डिजिट्स इन द ईथर को रियल इकोनॉमी में ला चुके हैं। 1997 के बार्ट आफ्टर डार्क में एक क्विक स्ट्रीट शॉट में छोटे रोबोट लाइक फ्लाइंग मशीन्स स्प्रिंगफील्ड रेजिडेंट्स के घरों तक पार्सल्स ले जाते दिखते हैं। Amazon और UPS के 2010s में ड्रोन डिलीवरी ट्रायल्स शुरू करने पर फैंस ने तुरंत उस सीन को याद किया। 1993 का मार्जिन चेन्स
एपिसोड एक मिस्टीरियस ओसाका फ्लू को स्प्रिंगफील्ड में स्प्रेड होता दिखाता है। लोग मास्क पहने और पैनिक शॉपिंग करते हैं। 2020 के कोविड-19 आउटब्रेक के दौरान ये पूरा स्टोरी लाइन इंटरनेट पर वायरल हुआ। लोगों को लगा जैसे कार्टून ने ग्लोबल पैंडेमिक का प्रीव्यू दिया हो। 1995 के लीसा's वेडिंग फ्यूचर टाइमलाइन में बार्ट और लीसा को वॉल माउंटेड स्क्रीन्स पे रिमोट लेसन्स अटेंड करते दिखाया गया था। उस वक्त ऑनलाइन क्लासेस कॉन्सेप्ट ही नहीं था। 2020 के लॉकडाउन्स में जूम स्कूल्स और वर्चुअल लेक्चर्स देखकर फैंस को वो एग्जैक्ट सीन याद आया। 994 के बार्ट ऑफ डार्कनेस में एक क्विक स्ट्रीट गैग में कार बिना ड्राइवर के चलते हुए दिखाई देती है। Us walked autonomous vehicles surf science fiction दी। आज टेस्ला ऑटो पायलट, वेमो और क्रूज के रोबो टैक्सीज स्प्रिंगफील्ड के यूएस शॉर्ट जोक को बिल्कुल रियल बना चुके हैं। 2008 के न्यू किड्स ऑन द ब्लेच में कैफेटेरिया बोर्ड पे लिखा आता है, लैब ग्रोन लंच कमिंग सून, टैब ये फनी थ्रो अवे लाइन दी। आज लैब ग्रोन चिकन और कल्चर्ड बीफ को FDA अप्रूवल्स मिल चुके हैं, एकदम उसी स्प्रिंगफील्ड लंचरूम के पोस्टर की तरह। 1998 के गर्ली एडिशन में लीसा को एक रोबो को एंकर मिलता है जो ह्यूमन लाइक डिलीवरी करता है। आज के AI जनरेटेड न्यूज़कास्टर्स, चाइना के शिन्हुआ एजेंसी या कोरिया के वर्चुअल एंकर्स देखकर लगता है राइटर्स ने मीडिया के AI फ्यूचर को पहले ही देख लिया था। 1994 के डीप स्पेस होमर में ऑर्डिनरी सिटीजन होमर नासा मिशन में जाता है और प्राइवेट पैसेंजर्स का रेफरेंस होता है। उस वक्त सिविलियन स्पेस फ्लाइट इम्पॉसिबल लगता था। आज ब्लू ऑरिजिन और स्पेसएक्स के टूरिस्ट फ्लाइट्स उस एनिमेटेड जोक को सच बना रहे हैं। 1995 के लीसा's वेडिंग फ्यूचर सीन्स में स्प्रिंगफील्ड में हर जगह नो कैश एक्सेप्टेड के बोर्ड लगे होते हैं। तब प्योर डिजिटल पेमेंट्स का आइडिया अजीब था। आज QR कोड्स, एप्पल पे और टैप टू पे कल्चर एग्जैक्टली वैसे ही लगते हैं जैसे शो ने दिखाया था। 1998 के 10 बस में मिल हाउस और बार्ट एक हेडसेट पहनकर फुली इमर्सिव वीडियो गेम वर्ल्ड में खो जाते हैं। टैब VR बस साइंस फिक्शन था। आज ऑक्यूलस क्वेस्ट और प्लेस्टेशन VR जैसे सिस्टम्स ने उस गैग को रियल एंटरटेनमेंट ट्रेंड बना दिया। 1993 के वैकिंग डे में एक बैकग्राउंड न्यूज़कास्ट स्प्रिंगफील्ड को एक्सट्रीम हीट वेव और राइजिंग वाटर्स के थ्रेट में दिखाता है। उस वक्त क्लाइमेट क्राइसिस मेन स्ट्रीम टॉपिक नहीं था। आज ग्लोबल हीट रिकॉर्ड्स और कोस्टल फ्लडिंग उस वन लाइनर को डिस्टर्बिंगली एक्यूरेट बना देते हैं। 2005 के फ्यूचर ड्रामा में होमर कैजुअली कहता है कि हम घर प्रिंटर से बना लेंगे। तब 3D प्रिंटिंग सिर्फ स्मॉल गैजेट्स तक लिमिटेड थी। अब मेक्सिको से UAE तक कंपनीज पूर कॉन्क्रीट हाउसेस 3D प्रिंट कर रही हैं। 2008 के ब्रॉल इन द फैमिली में बार्ट एक कंपेटिटिव वीडियो गेम लीग का स्टार बनता है जहां क्राउड्स और स्पॉन्सरशिप्स होती हैं। आज के $multi-million ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स उस थ्रो अवे सब प्लॉट को परफेक्टली मिरर करते हैं। 994 के बार्ट गेट्स एन एलिफेंट में मार्ज एक पॉकेट डिवाइस से ग्रोसरी लिस्ट डिक्टेट करती है जो आवाज सुनकर काम करता है। उस वक्त वॉइस रिकग्निशन नॉवेल्टी था। आज अलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट बिल्कुल उसी स्प्रिंगफील्ड गैजेट जैसे लगते हैं। 998 के लीसा's वेडिंग में एक फ्यूचर सीन में स्प्रिंगफील्ड हाउसेज अपने आप लाइट्स ऑन ऑफ करते और टेम्परेचर एडजस्ट करते हैं। आज के अलेक्सा, गूगल नेस्ट और फुल होम ऑटोमेशन सिस्टम्स उस एनिमेटेड ग्लिम्प्स को पूरा कर चुके हैं। 1994 के होमर एंड अपू में एक बैकग्राउंड जोक में स्प्रिंगफील्ड जिम में लोग ग्लोइंग रिस्ट बैंड से हार्ट रेट और स्टेप्स मॉनिटर करते दिखते हैं। आज के फिटबिट, एप्पल वॉच और कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर्स वही काम रियल में कर रहे हैं। 2002 के अ हंका हंका बर्न्स इन लव में टीवी न्यूज टिकर कैजुअली अनाउंस करता है, 2 giant networks to merge into one unstoppable empire। आज डिज्नी फॉक्स, वार्नर डिस्कवरी जैसे हिस्टोरिक मर्जर्स अस ब्लिंक एंड मिस लाइन को सच साबित करते हैं। 925 के बर्ट सेल्स हिज सोल में लीसा ओशन पोल्यूशन को स्टॉप करने के लिए ह्यूज ऑटोमेटेड स्किमर्स का आइडिया प्रपोज करती है। आज द ओशन क्लीनअप प्रोजेक्ट के मैसिव फ्लोटिंग बैरियर्स एग्जैक्टली यूएस कार्टून प्रोटोटाइप जैसे लगते हैं। 1996 के मार्ज ऑन द लैम में बैकड्रॉप में एक बिलबोर्ड लिखा होता है, वैक्यूम ट्यूब ट्रांसपोर्ट कमिंग सून। तब यह सिर्फ एक absurd जोक था। आज इलॉन मस्क के हाइपरलूप कॉन्सेप्ट्स और मगलेव ट्रेन प्रोजेक्ट्स उस स्प्रिंगफील्ड बिलबोर्ड को eerily प्रोफेटिक बना देते हैं। 1995 के लीसा's वेडिंग में
होमर और लीसा एक वॉल साइज स्क्रीन पे लाइव फैमिली कॉल करते हैं। उस वक्त इंटरनेशनल वीडियो चैट सिर्फ साई-फाई थी। आज जूम, फेस टाइम और गूगल मीट ने उस स्प्रिंगफील्ड मोमेंट को पूरा कर दिया। 19999 के EIEI अनॉयड ग्रंट में होमर एक्सीडेंटल हाइब्रिड क्रॉप्स उगाता है जो ग्लोइंग ग्रीन होती हैं। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी के आज के जीन एडिटेड प्लांट्स और डिजाइनर बेबीज की रिसर्च देखकर लगता है राइटर्स ने बायोटेक का फ्यूचर पहले ही सोच लिया था। 1994 के बार्ट ऑफ डार्कनेस में बैकग्राउंड में एक गैजेट दिखाया जाता है जो इंस्टेंटली किसी भी जुबान का ट्रांसलेशन करता है।